On class 5 chapter 2 history and the concept of the time. You can write the question answer by stop the video and चैप्टर 3 के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. यू कैन राइट द आंसर. Question number 2. Select the appropriate alternatives and complete the following statement. Next is question number 3. Answer the following question in a one sentence each. Which scientific method are used to estimate the age of the layer of soil and the remains found in them? You can write the answer. Carbon 14 analysis and 3D analysis are the scientific method used to estimate the age of the layers of soil and the remains found in them. Question number 2 है, how is the first century of common era written? You can write the answer. The first century of the common era is written as a 1-100 AD. Question number 3 है, what is the customary practice to start a new era? You can write the answer. It is an age-old custom to start a new era to commemorate of special events such as the coronation of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Question number 4 है, how do we get information about the events in a prehistoric period? You can write the answer. We get the information about the event is the prehistoric period from the remain buried under the ground and with the help of the scientific method. You can stop the video and write the answer. How did the Hijri era begin? The Hijri era began to commemorate the event of migration of the Prophet Muhammad from Mecca to Medina. Okay. Next है big questions है. Answer the following question in a brief. तो पॉइंट से लेके वैसा पॉइंट से ही लिखो. What is the mean by the unilar division of the time? The first point है 7 days make a week, 2 week make a 14 and 4 week make a month. Okay. 12 month make a year, 100 year make a century and the 10th century make a million. Point 3 है, this is the method of dividing time in known as the unilar division of the time. Okay. मीन्स 7 days मेक अ वीक, 7 days से वीक हो जाता है, 2 week से 14 nights बनता है एंड 4 week से 1 month, 12 month मेक अ ईयर, 100 year make a century and 10 century make a million year. This is the method of dividing time is known as the unilar division of the time. बड़ा आंसर है, आप क्वेश्चन पॉइंट्स लिख के उसको आप स्टडी कर सकते हैं. ओके. देन है व्हाट आर द यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग टाइम. तो फर्स्ट पॉइंट है अ सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरिंग टाइम. 60 सेकेंड मेक अ मिनट एंड 60 मिनट मेक अ आवर. 24 आवर मेक अ डे. 7 days मेक अ वीक and 2 week make a 4 night, 4 week make a month and 12 month make a year, on a 100 year make a century and 10 century make a million. Next है write about the Rajyaabhishek Shaka.
You can write the answer. The coronation of Chhatrapati Shivaji Maharaj took place in 1674 AD. To commemorate this special occasion, Rajyavishesh Shaka era was started. Question number 5 है, write a short note of the following. You can write the answer. पॉइंट से आंसर आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो. टाइम इन हिस्ट्री. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप स्कूल में ओनली ये डायग्राम आएगा और आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा. तो ये आप करके जाइए स्कूल में जाते समय अपना एग्ज़ाम के लिए. ओके, थैंक यू वेरी मच. चैप्टर 3 लाइफ ऑन अर्थ के क्वेश्चन आंसर आप अगले वीडियो में देखेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको आगे लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा. थैंक यू.